Today I am going to revise chapter Outcomes of Democracy. In this chapter, you will read about what is democracy and its features. Then, in this chapter, you also have read about why democracy is better than its alternatives. And features of democracy. तो आपको ये भी पूछ सकते हैं accountable, responsive and legitimate. How can you say democratic form of government is accountable, responsive and legitimate? आप कैसे कहोगे accountable, responsive and legitimate है? तो इसमें आप बताओगे democratic government is accountable because representatives are answerable to the people. They are elected by people through elections. अब कल elections है तो representatives जो हैं they are elected through elections. And representatives have to face people in the next elections. That's why they are answerable to the people. They are accountable. Elections make representatives accountable क्योंकि next elections में representatives को लोगों को फिर face करना होता है. तो that's why they are answerable. They work according to the wishes of the people. And इसी में आप बता दोगे Right to Information Act also make representatives government, also make our government answerable. By this right to Information Act, by this right, people have full right to know about the functioning of the government. So RTI जो right है that make our government accountable. Now is it clear? Democratic form of government is accountable because representatives are elected by people through elections and representatives work on the behalf of the people according to the wishes of the people because they have to face people in the next elections. So elections make representatives accountable. On the other hand, our government has passed Right to Information Act and this act make our government answerable because by this right through RTI, Right to Information Act के through, people have full right to know about the functioning of the government. अब हम कहेंगे responsive. Democratic government is responsive. It is always responsible for the decisions taken by it and it always takes responsive decisions. Democratic government take decisions by consulting large number of the people of the society and such decisions are always good for the whole of the society. Because though in democratic government decision making is slow, but decisions taken by consulting large number of the people of the society are always good for the whole of the society. It is legitimate because rulers, representatives, they are elected by people. So government is legitimate. Legitimate होता है कि जो representatives होते हैं ना, they are elected by people. And in our democratic countries, we can say representatives are elected through elections. And in our country, elections are held after every 5 years. So representatives are elected by people through elections after fixed tenure. So in this way, we can say democratic government is accountable, responsive and legitimate. Listen again. How can you say democratic government is accountable, responsive and legitimate? Accountable इसलिए क्योंकि वो answerable है. Work according to the wishes of the people because representatives are elected by people through elections. Elections make representatives answerable. RTI Act जो है that also make government accountable because people have full right to know about the functioning of government. Responsive, government always take responsive decisions and responsible for the decisions taken by it. Democratic government take decisions by consulting large number of the people of the society and such decisions are always good for the whole of the society. Government is legitimate because rulers are elected by people through elections. But this topic will be clear to you. And next is economic growth and development in democratic countries is slow. Economic growth and development in democratic
countries. तो इसमें हम बताएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इज स्लो एज कंपेयर टू डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्लो है अगर हम इसे कंपेयर करें डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. तो ऐसा क्यों? तो हम कहेंगे फॉर दिस वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी जो है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. There is no better option than democracy. Today only 1/4 world is non-democratic and rest of the world has become democratic. तो गवर्नमेंट को तो हम नहीं ब्लेम कर सकते फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वी कांट रिजेक्ट डेमोक्रेसी फॉर दिस रीजन एंड ऑप्ट फॉर डिक्टेटोरियल. नो, वी कांट रिजेक्ट गवर्नमेंट फॉर दिस रीजन बिकॉज फॉर दिस गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. There are various other factors responsible for slow economic growth and development, and they are, सबसे पहले तो हम बताएंगे growing population, and then cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, global situation. So these are the factors responsible for slow economic growth and development. So for this we can't blame government. I'm going to repeat it again. Economic growth and development in democratic countries is slow, whereas in dictatorial form of government it is fast. So should we reject democracy for this and opt for dictatorial form of government? No, we can't reject democracy for this reason. We can't blame government for this reason because it is the best form of government. Government can only create conditions and it depends upon the citizens to avail benefits or not. गवर्नमेंट है ये तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस. इट डिपेंड्स अपॉन सिटीजंस टू अवेल बेनिफिट्स और नॉट. तो टुडे ओनली 1/4 वर्ल्ड इज नॉन डेमोक्रेटिक बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज बिकम डेमोक्रेटिक. तो कुछ तो बात है ना कि कंट्रीज डेमोक्रेटिक बनती जा रही हैं. इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इससे बेटर गवर्नमेंट नहीं है. देयर इज नो बेटर गवर्नमेंट देन डेमोक्रेसी. तभी वो कंट्रीज सिर्फ 1/4 वर्ल्ड जो है दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक एंड उनमें से भी अगर हम कहें तो मैनी कंट्रीज आर स्ट्रगलिंग टू बिकम डेमोक्रेटिक. तो ये तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. इसको हम इस बात के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकते फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. या हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट ने तो कंडीशंस क्रिएट की. अब सिटीजन्स पे डिपेंड करता है कि अवेल बेनिफिट्स और नॉट. तो साथ में हम बताएंगे देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब वो आप कौन से फैक्टर्स बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बता दोगे कि पॉपुलेशन ही बढ़ती जा रही है. ग्रोइंग पॉपुलेशन, cooperation from other countries, global situation, economic priorities adopted by the country. So these are the factors responsible for slow economic growth and development. So we can't blame government for this reason. Next is, अगर आपसे पूछें first accountable, responsive, then economic growth and development, then poverty and inequality. Poverty and inequality. उसमें हम कहेंगे द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ऑल आर ट्रीटेड इक्वली. लिसन अगेन, मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी. There is no discrimination on the basis of rich and poor and on the basis of caste. All are treated equally, but still we can see inequality and poverty in democratic countries. This is the main challenge faced by democratic countries these days. Poverty and inequality is the main challenge faced by democratic countries these days. For this, we can held government responsible because wealth of the country is not equally distributed.
and rich are becoming richer, poor are becoming poorer day by day. India is the largest democracy in the world, and after so many years of independence, in our country, so many people are still below poverty line. Near about 26% people are below poverty line. And in Bangladesh, half of the population is below poverty line. 50% people in Bangladesh are below poverty line. तो इसमें से आप बताओगे कि this is the major challenge faced by democratic countries. Poverty and inequality is the major challenge faced by democratic countries. So the feature of democracy is equality. There's no gap between rich and poor, and there's no discrimination on the basis of caste, but still we can see poverty and inequality in democratic countries, and it's the main challenge faced by democratic countries these days. तो हम कहेंगे कि जो रिच है ना, wealth of the country is not equally distributed. Reason behind that, wealth of the country is not equally distributed. Rich are becoming richer, poor are becoming poorer day by day. तो फिर हम कहेंगे कि India, we will take example of India. India is the largest democracy in the world, and after so many years of independence in our country, still so many people are below poverty line. Near about आप कह सकते हो कि 26% people are below poverty line. Whereas अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो half of the population means 50% people are below poverty line. So this is the major challenge faced by democratic countries these days. Now the fourth topic is accommodate diversity. Accommodate diversity. या accommodation of diversity. तो इसमें आप बताओगे democratic governments accommodate diversity by sharing its powers with the people of diverse group. Democratic government accommodate diversity by sharing powers with the people of diverse group. और यहाँ पे आप बताओगे कि in India, people of diverse group live, and they all live together in a same country in a peaceful manner because our government has accommodated diversity. Here again you will give example of India. वैसे हर बात में India is example because India is the largest democracy. तो हम कहेंगे democratic government accommodate diversity by sharing powers with the people of diverse group. No problem, you have read about Belgium also. Belgium की गवर्नमेंट ने भी पावर शेयर की थी, अकोमोडेट की थी डाइवर्सिटी, दे फॉलोड अकोमोडेशन पाथ. तो आप यहाँ पे इंडिया की हर बार एग्जांपल दे सकते हो अपनी कंट्री की. तो अकोमोडेट डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट accommodate diversity by sharing its powers with the people of diverse group. India is the largest democracy, and in our country people of diverse group live together in a same country in a peaceful manner because our government has accommodated diversity. There is unity in diversity in our country. So for this, अब आपसे पूछ सकते हैं राइट द कंडीशन फॉलोड बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, या विच कंडीशंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू फॉलो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. तो इसमें आप बताओगे कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टुगेदर. मेजॉरिटी कैन नॉट डोमिनेट minority. Majority cannot do whatever it want. Listen again. Majority and minority have to work together. Majority cannot dominate minority. Majority cannot do whatever it want. Government has to carry general views. Government को कैसे views लेके चलना चाहिए? Government should carry general views. No doubt, democracy is the rule of majority, but here majority is not formed on the basis of caste, religion, language. Everyone can be the part of majority.
accommodate diversity. Democratic government accommodate diversity by sharing its powers with the people of diverse group. In India, people of diverse group live together in a peaceful manner in a same country because our government has accommodated diversity. So there is unity in diversity in our country. So for this, government has to follow the following conditions. First of all, हम कहेंगे majority and minority have to work together. Majority cannot dominate minority. जैसे कि सिन्हालास ने तमिल को dominate किया था. You have read about श्रीलंका. तो वहाँ पे majority ने minority को dominate किया था. Whereas in Belgium वहाँ पे कोई domination नहीं थी. उन्होंने diversity को accommodate किया था. You have read about श्रीलंका एंड बेल्जियम. एक में आपने पढ़ा था कि उन्होंने मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को डोमिनेट किया था. दैट यू हैव रेड इन श्रीलंका. फिर आपने पढ़ा बेल्जियम, तो वहां पे मेजोरिटी माइनॉरिटी ने मिलके वर्क किया था. बट नो प्रॉब्लम, वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री. तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी हैव टू वर्क टुगेदर. मेजोरिटी कैनॉट डोमिनेट माइनॉरिटी. Majority cannot do whatever it want. Government should carry general views. फिर हम बताएंगे no doubt it is the rule of majority. You know it very well कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ मेजोरिटी. जो पॉलिटिकल पार्टी, अभी कल इलेक्शंस होने हैं पंजाब में, तो आप नोट करना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी शो करेगी इन द असेंबली इलेक्शंस, वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. कई बार पार्टी मेजोरिटी शो नहीं कर पाती, देन पार्टी हैज टू जॉइन हैंड्स विद other political parties to show majority and form government. तो उसे हम कह देते हैं coalition government. बट रूल तो वही करता है ना जो मेजोरिटी शो करता है. तो हम कहेंगे नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी. है तो ये मेजोरिटी का रूल है. मीन्स एट प्रेजेंट इन सेंटर बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी शो की थी, तब भी वो रूल कर रहे हैं. तो बीजेपी में हर कास्ट, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज के लोग हैं. तो वो मेजोरिटी सिर्फ एक कास्ट, एक रिलीजन को लेके नहीं बनी. हमारी पार्लियामेंट में किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन की फ्रोजन सीट्स नहीं है. तो हम कहेंगे नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी. है तो ये मेजोरिटी का रूल, बट हियर मेजोरिटी इज नॉट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज. Everyone can be the part of majority. No, I think this topic is clear to you. Accommodate diversity. आपको हर बात में आप इंडिया की एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ टॉपिक इज प्रमोट डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, ऑफ इट्स सिटीजन्स. So democratic government promote the dignity of it. Democratic government promote the dignity of its citizens by giving them equal rights. Democratic government citizens की dignity को promote करती है by giving them equal rights. Democratic government promote the dignity of its citizens. कैसे? By giving them equal rights. There is no discrimination on the basis of हम कहेंगे कास्ट, कलर, जेंडर. तो इसमें हम ना थोड़ा बैक बताएंगे अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें हम बताएंगे अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी वाज पैट्रियार्चल. हम कहेंगे पूरे वर्ल्ड की हम बात करेंगे. इन द वर्ल्ड the structure of the society was patriarchal. Earlier, the structure of the society in the world was patriarchal. Male dominating societies were there in the world. पूरे वर्ल्ड में पहले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज होती थी. बट एज कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेटिक, जैसे जैसे कंट्रीज डेमोक्रेटिक बनती चली गई, they started giving equal rights to all, maybe male, maybe female, or rich and poor. तो इस वजह से हम बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स.
earlier the structure of the societies of the world was, कैसी society थी world की, patriarchal. What's the meaning of patriarchal? Male dominating societies होती थी world में. And फिर हम कहेंगे कि जैसे जैसे तब वुमेन को राइट्स नहीं मिले हुए थे. यू हैव रेड फ्रांस, यू हैव रेड जर्मनी, यू हैव रेड रशिया. वुमेन को राइट्स नहीं मिले हुए थे. यू नो इट वेरी वेल. चाहे वो यूके था, चाहे वो यूएसए था. रिच एंड मेल को, रिच एंड प्रॉपर्टी ऑनर्स, सिर्फ मेल को राइट मिलते थे. राइट टू वोट सिर्फ मेल के पास होता था, वुमेन के पास नहीं होता था. यू हैव रेड ऑल. इन 9th क्लास यू हैव रेड फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि वुमेन को कितनी स्ट्रगल करके राइट टू वोट मिला था. तो मैं वही बात कर रही हूँ. Earlier the structure of the societies of the world was patriarchal, male dominating societies were there. No rights were given to women and poor people. But as the countries became democratic, जैसे जैसे countries democratic बनती चली गई, they started giving equal rights to their citizens. Maybe male, maybe female, maybe rich, maybe poor. They started giving equal rights to all. फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि India is the largest democracy, and in our country, women have given equal rights as given to men after independence. When new constitution was framed, our government has given equal rights to men and women. And legal base was also given to the rights of the women. Women can launch feminist movements if any injustice is done with them. And in our country, seats are reserved for SC and ST. In this way, our government has promoted the dignity of these people also. Democracy promotes the dignity of its citizens by giving them equal rights. Earlier, the structure of the societies was patriarchal. Male dominating societies were there in the world. No rights were given to poor people or women. Women had to struggle a lot. But as the countries started becoming democratic, they started giving equal rights to all the citizens, maybe male, female, or rich and poor. They started giving equal rights to all. After independence, फिर आप बताओगे India is the largest democracy. After independence, our government also has given equal rights to all men and women, rich and poor. Our government has given equal rights to all. And legal base was also given to the rights of the women so that they can launch feminist movement if any injustice is done with them. अब यहाँ पे आपको फेमिनिस्ट का मीनिंग आना चाहिए, पैट्रियार्चल का मीनिंग आना चाहिए. पैट्रियार्चल मीन्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. फेमिनिस्ट का मीनिंग है कि पीपल हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. जो मेन एंड वुमेन के इक्वल राइट्स में बिलीव करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट. तो फिर हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में सीट्स आर रिजर्व फॉर SC and ST in the government bodies. Our government has done so that no injustice can be done with these people. हमारी गवर्नमेंट ने SC ST की डिग्निटी को भी प्रमोट किया, उनको भी उनकी भी सीट्स को रिजर्व किया इन गवर्नमेंट बॉडीज, ताकि वो लोग भी पावर में रह के अपनी कंडीशन इंप्रूव कर सकें. तो इन दिस वे आवर गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन्स. टू प्रमोट डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजन्स में आप अपनी गवर्नमेंट का जब लिखोगे तो you have to write about women and SC and ST. But before writing about SC and ST, you have to write one line: India is the largest democracy in the world. Then you can write the line: in our country, seats are reserved for SC and ST in the government bodies. So in this way, government has promoted the dignity of these people also. Next, examination या testimony in democratic countries never gets over. Justify the statement. In democratic countries, examination never gets over. Justify the statement. अगर ये आ जाए तो इसमें आप बताओगे इन डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन ये नहीं है कि उसके कोई पेपर ही हो रहे हैं सच में. नो, एग्जामिनेशन मीन्स चैलेंजेस. यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जामिनेशन किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? चैलेंजेस.
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के चैलेंजेस कभी भी खत्म नहीं होते, एक को ओवरकम करती है, अनदर इज रेडी प्रोड्यूसेस अनदर. इफ गवर्नमेंट ओवरकम वन चैलेंज प्रोड्यूसेस अनदर, अनदर इज रेडी फॉर इट. एक को क्लियर करती है, दूसरा उसके लिए रेडी होता है. इसमें हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर इफ गवर्नमेंट क्लियर वन चैलेंज प्रोड्यूसेस अनदर, अनदर इज रेडी फॉर इट, because it is the best form of government and expectations of people are more from the government. And फिर हम कहेंगे कि लोग जो है ना इसे बेस्ट टू बेस्ट बनाना चाहते हैं, उनकी आस उम्मीद बढ़ जाती है. If government provides some facilities to the people, people never get satisfied. They demand more and more. कभी भी लोग, आपने हमेशा नोट किया होगा, लोग कभी भी गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते. गवर्नमेंट कुछ भी करे, पीपल डिमांड मोर एंड मोर. तो पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड. इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू द पीपल, पीपल नेवर गेट सेटिस्फाइड. दे डिमांड मोर एंड मोर. दे ऑलवेज सी देयर पावर होल्डर्स क्रिटिकली बिकॉज दे वांट टू मेक देम बेस्ट. क्योंकि वो उनको बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे सी देम क्रिटिकली. अपने पावर होल्डर्स को वो हमेशा क्रिटिकली देखते हैं, उनमें कोई ना कोई वीकनेसेस ढूंढते रहते हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक देम बेस्ट. डेमोक्रेसी में एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर. एग्जामिनेशन हियर रिप्रेजेंट्स चैलेंजेस. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हम कहेंगे कि इट हैज टू फेस सो मेनी. नो डाउट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इतनी बेस्ट गवर्नमेंट है तो ये तो नहीं है ना कि इसको कोई चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ रहे. इट हैज टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. एक साइड तो हम कहते हैं बेस्ट गवर्नमेंट है, फिर हम साथ ही कहते हैं कि इट हैज टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. बेस्ट को भी तो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. इट हैज टू फेस सो मेनी चैलेंजेस. इफ इट क्लियर्स वन चैलेंज, अनदर इज रेडी प्रोड्यूसेस अनदर. It is the best form of government and expectations of people are more from the government. If government gives some facilities, people never get satisfied. They demand more and more from the government. People always see their power holders, their representatives, जो भी उनके government के representatives हैं, people always see them critically. ऐसा क्यों? Because they want to make them best. क्योंकि वो उनको बेस्ट बनाना चाहते हैं. They see their power holders critically. So you have done. और एक टॉपिक जो लास्ट में बचा, that is how can you say democracy is best या better than its alternatives. Alternatives means other form of government. आप कैसे कहोगे डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है? तो ये सारी बातें बताओ उसमें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, whereas अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ना तो वो अकाउंटेबल होती है, ना रिस्पॉन्सिव, ना लेजिटिमेट. अब पूरा चैप्टर करने के बाद यू कैन डू दिस क्वेश्चन कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट, whereas अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या मोनार्की या डिक्टेटोरियल वो कभी भी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट नहीं होती. तो दिस मेक डेमोक्रेसी बेस्ट. फिर हम कहेंगे इट प्रमोट द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स, whereas in other form of government sometimes equal rights are not given to the citizens. Democratic government अगर हम बात करें तो democratic government जो है ना provide various civil liberties to the citizens, whereas other form of government depends upon the wish of dictator or monarch to provide civil liberties or not. Democratic form of government में मैंने अभी बोला people criticize their power holders. लोग अपने power holders को हमेशा critically देखते हैं. तो हम कहेंगे कि in democratic form of government people can criticize the functioning of the government, whereas in other form of government they can't criticize the functioning of the government. ना तो वो monarch को criticize कर सकते हैं, ना ही dictator को. कहाँ हिटलर अपने आप को criticize करने देता था? कभी भी नहीं. So people can't criticize their power holders in other form of government, whereas in democracy they can criticize their power holders. तो इसमें से हम बताएंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना कहीं फिर साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट. जजेस कैन गिव देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे विदाउट एनी आउटर प्रेशर, whereas in other form of government अगर हम बात करें मोनार्की या डिक्टेटोरियल की,
तो वहां पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो या तो मोनार्क के अंडर होती है या डिक्टेटर के अंडर होती है। दे कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द जजेस, वो अपने वे से जजेस के डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं। हिटलर ने तो जुडिशरी भी अपने अंडर रखी हुई थी। सऊदी अरेबिया में जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट, मोनार्क कैन चेंज द डिसीजंस। तो इट मींस डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इतना सब कुछ, हमें इतनी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, तो हाउ कैन वी से कि डेमोक्रेसी बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो हम कहेंगे ना कि दिस इज द बेस्ट, ये बेस्ट, हम इसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने अभी अभी बोला कि स्लो है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं, वी कांट रिजेक्ट इट बिकॉज, फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि 1/4 वर्ल्ड ही रह गया नॉन डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कुछ तो बात है ना, ये बेस्ट है, तभी लोग इसे ऑप्ट करते जा रहे हैं, कंट्रीज ऑप्ट करती जा रही हैं, दे आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक, एंड दोज हु आर नॉट still those who are not democratic, they are trying, they are struggling to become democratic, countries struggle कर रही हैं, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, they want to become democratic, तो इस वजह से हम कहेंगे कि बेस्ट है, तभी लोग इसे ऑप्ट करते जा रहे हैं, they are trying to become democratic, countries which are not democratic, they are trying to become democratic, and today only 1/4 world is non-democratic, that's why we can say it's the best form of government.